ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. Reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है, आप कहेंगे तो मैं उत्तर देता हूं। जरूर, अगर आप देना चाहें तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु पर ट्रांसलेशन इज अवेलेबल प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते, भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है, फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168th. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3 and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you. सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं, उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है, तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है।
दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहाँ तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया। उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहाँ तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है। लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं, और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर PM10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है। और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे, ताकि वो भी अपने अपने म्यूनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister, I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities, so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं। लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ भी MOU करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्यूनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है, इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ MOU किया गया। और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?
माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21 श्री वेंकट रमणा राव मोपी देवी। Yes, sir. Honorable Minister. First supplementary. Sir. Respected Chairman, sir, I thank you so much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of Government of India that and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kilometers, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 square meters of the mangroves area, there is an enormous scope of establishment of integrated aqua parks, aquarium complexes, oceanaries, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation of the state, as well as Please be brief. Our Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu, under his immaculate leadership, is striving hard for Please be brief in question. Sir. Of employment of the largest extent of the state. The government of India is supporting is the Venkat Ramana ji, please, this is not 0 hour. Please put your question. Sir, this is sir. Question. What is your question? Sir, whether the government has taken any measures of introducing aqua tourism in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Please. उपसभापति जी, माननीय सदस्य को बाकायदा लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर ये दोनों के दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और ये पूरे भी हो गए। दूसरा जो बौद्ध परिपथ के तहत सालीहुंडम और बाकी कोंडा बौद्ध परिपथ है वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वो भी पूरा हुआ है। प्रसाद योजना के तहत भी अमरावती शहर और श्रीशैलम 2 बड़ी परियोजना है जिनको पूरा किया गया है। मूलतः पर्यटन के प्रचार प्रसार का काम राज्य सरकार का है। मैं और भी अगर वो चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन का जो महत्व का प्रदेश है उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है। Second supplementary, Mr. Rao. Sir, aquaculture could also the income for the coastal communities and especially fishermen communities. Fish flock should be heavily engaged in aqua tourism projects. Are you reading something or putting your question? So finish, sir. Question. Please. He has no other question. Sri Vijay Sai Reddy ji. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially fishing community. Fisher folk should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the Minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective state governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism? Thank you, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन की योजना है वो तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहाँ पर थी, लेकिन जो पर्यटन अवसंरचना की बात माननीय सदस्य ने की है मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं और उसके तहत पुट्टपर्थी में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वो प्रस्ताव वो भी पूरा होने की स्थिति में है और विशाखापट्टनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिए हैं। मैं विचाराधीन एक परियोजना है सिंहाचलम और अन्नावरम, मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिए गए हैं। अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जलाशय, उन 4 जलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसा दिया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22, माननीय श्री संजय राउत जी। माननीय श्री संजय राउत जी, नॉट प्रेजेंट।
फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रियंका चतुर्वेदी जी। Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? थैंक यू। Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को। इसमें फिर हमने एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया। मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत करा देंगे। धन्यवाद। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है? ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया, तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है। जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3री शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है, देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक्टिव कंसिडरेशन का जो प्रकरण पहले जो सांसद ने उठाया, माननीय सांसद ने उठाया, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी शीघ्र निर्णय होने वाला। माननीय रजनी पटेल जी। पाटिल जी, रजनी पटेल जी, नहीं पाटिल जी। यस सर, क्या बोल। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से, तो मराठी भाषा जो है उसकी संस्कृति और उसकी इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आद्य कवि मुकुंदराज, उन्होंने ये मराठी भाषा का उगम उनसे हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया था। हमारे नामदेव, संत नामदेव, जिन्होंने ये मराठी भाषा पंजाब तक लेके गए। रजनी जी, सवाल मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम अभ्यास कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना नहीं, उन्होंने मंत्री महोदय ने बताया, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको ज्ञान देना चाहती हूँ मराठी भाषा के लिए। नहीं, आप ज्ञान देना चाहती है तो अलग है, सवाल पूछना चाहती है तो मैं मौका दे सकता हूँ। ज्ञान बाहर अलग से दे सकती हैं, आप सवाल पूछें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे बोल रहे हैं, जब वो हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि मराठी भाषा सांस्कृतिक लेवल पे लिया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रयास से इसको जल्द ही किस प्रयास में सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है और उसके लिए क्या करना चाहती है? धन्यवाद। ये हम पूछना। धन्यवाद। चेयरमैन सर, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य, मराठा इतिहास, इस पर गर्व है हमें। हम जल्दी ही इस पे निर्णय करने वाले हैं। आप इस पे ये शंका मत करिए कि हम जो आप ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होता है डिप्टी चेयरमैन सर, तो उसमें समय लगता है।
MHRD का भी संस्कृति मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई मंत्रालयों के बीच में इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23 श्री रामचंद्र झांगरा जी। माननीय रामचंद्र झांगरा जी नहीं है, अनुपस्थित। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय केसी वेणुगोपाल जी। The government is nowadays taking action against some particular channels on citing this anti-national activities. We are also very much keen about the anti-national activities for some channels is happening. We are also very much concerned about it. But the complaint in the public domain is, sir, the government is misusing this penal code to suppress the freedom of expression in the country, freedom of the press in the country. Recently, one of the channel, Media One, has been given a direction to stop the telecast for the IP by citing the same security issue. Whether they have done anything wrong, we would like to know this. Thank you. From the government, we would like to know what is the crime they have done. Thank you. Thank you. Please, no, please. Respected Deputy Chairman, sir, our government is concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey, honorable member, we are not in 1975. We are not in emergency. We are in Brighton period under the Modi government. Please. Sir, I am coming to my answer. Sir, आप तो सुनो तो चाहिए. वेणुगोपाल जी, आप तो मेरा आंसर तो सुनो. आंसर तो सुनो. Take your seat, please. You have to listen my answer. Please take your seat. See, please. You, please, sir. Please, sir, Venugopal ji. But please, please. Sir, Venugopal ji's question is that Media One. Sir, that Media One, we are not doing anything. Sir, whatever the channels permission is we are giving, under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the Media One is sub judice matter also. I want to convey this. And also, sir, within 2 months, our Venugopal ji, please take his answer. Sir, please, within 2 listen, months, madam, listen, please. Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading. Those, they content against Nothing the nation. is going on record. And content against the integrity of the nation. And content against the safety of the country. So we can't tolerate. We are taking, for example, 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. Thank you. Lieutenant General DP Vats retired. DP Vats. Very good. From Lok Sabha chamber, sir. Lok Sabha chamber, sir. आप अपना सवाल पूछे. Through you, I will like to ask the honorable minister, sir. What about action against the people who come on media and use the filthy language? And the channels which give fake news? I would like to know action only initiated or it culminated into punishment also. Thank you. I want to convey through this Augustus to the member. See, again I am telling, we are concerned about the freedom of speech and freedom of expression. See, the Press Council of India is there. Sir, there is three-tier mechanism is there. सीट पर बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा. Three-tier mechanism is there. One is self-regulatory.
self-regulatory, then self-regulatory bodies can take. If the grievances is they're not sorted out, then only inter-department committee is going to take the grievances and we sort out the grievances. In this, I want to tell this, 160 cases we initiated against the TV channels. Time is over, channels. Minister. Now time is over. Please. Individual. Now discussion on motion of thanks on the President's address. Honorable Sri Thambi Durai ji, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the opportunity to speak on the subject. On behalf of ADMK party, I raise to thank the Honorable President's address to the Parliament, which listed the achievements of Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the government led by him, including achievements in the healthcare, infrastructure, defense, farming, startups, and others. At the outset, I congratulate the Modi ji government for its successful fight against the COVID-19 pandemic and thank the central government for extending meaningful support to the efforts of all the governments in India. Sir, I want to once again thank our Honorable Prime Minister. When ADMK government was in power, when the first phase of epidemic took place, at the time, government extended a lot of extension to our former Chief Minister Edappadi Palanichami, who did marvelous work to tackle the pandemic situation at the time. Sir, at the beginning of the COVID-19 pandemic, we were all thought, don't know what is going to happen. Most of the even developed countries worried how to tackle this issue. But at the time, when the world silence please. Worried about that, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who took quick decisions and firm implementation of the measures in containing the spread of the virus. As Honorable President mentioned in his address, the proof of India's capability to fight against COVID-19 has been witnessed in the vaccination drive. The rupees 64,000 crore Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is preparing the countries for future healthcare crisis. I should like to make a special mention of the wonderful action taken by the ADMK government in Tamil Nadu under the leadership of Thiru Edappadi Palanichami and Thiru O. Pannirselvam to protect the lives and livelihoods of the almost 8 crores of the population of Tamil Nadu at that time, sir. Sir, ADMK government, during its period, pandemic situation, provided each cash assistance of rupees 5,500 rupees, provisions and food grains to more than 1.2 crore families for within 8 months, and separate payment of rupees 2,000 to Labour Welfare Board members, weavers, and to several lakh migrant workers. For several months, nutrition food, cooked and prepared, was given free of cost through the hundreds of people through Amma canteens in the major towns in the cities of Tamil Nadu. Medical help was readily made available to millions of COVID-affected people in Tamil Nadu. Excellent treatment was provided to all in the need. Indeed, an exemplary work was in force during the time of ADMK government, headed by Edappadi Palanichami, and take the opportunity to thank the central government for the support it provided for us at the time. Sir, we have administered 150 crore vaccines in less than a year. More than 90% of adults have received at least one dose of vaccine, while more than 70% have been fully vaccinated, and the third
third dose of the vaccine is being administered effectively. I most congratulate our Honorable Prime Minister Modi ji government for this monumental work executed effectively. Sir, India has emerged as a role model for the world in providing health care and affordable medicines to the people through Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ayushman Yojana. And as it has set up 8,000 kendras to provide the poor with affordable medicine. It is very important to note that our country has exported Ayush products worth 11,000 crores to foreign countries. Sir, and also, you know very well, even though we faced a lot of problems, epidemic problem, during the Honorable Prime Minister Narendra Modi period, in 8 months between April and November 2021, foreign direct investment of 48 billion was made in India. Our foreign exchange reserve exceeded 630 billion US dollars. Because of the Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity, people have benefited from direct cash transfer during the pandemic. More than 44 crore people have joined the bank system. These are all not small achievements. Sir, in the area of agriculture and food distribution, our country has set new records under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Rupees 1.8 lakh crores have been transferred to more than 11 crore farmers' families. More than 1 lakh crore rupees have been paid as compensation to around 8 crore farmers. 6 lakh hectares of land has been developed with irrigation facilities under the various schemes of the central government. And I register my appreciation for these historic achievements. And as I am also the son of the rural small farmer from remote village of Tamil Nadu, the collateral-free loans given to the 13.5 lakh medium, small and micro industries have helped to keep the economy and core sectors production more. The huge emphasis of this government on the development of infrastructure and transport will accelerate overall growth of the country and generate new job opportunity for several lakh workers. So I must especially appreciate this government for rupees 65,000 crores financial through our banks given to 25 lakh women's self-help groups. Sir, in the line with the politics mentioned by our policies, in the line of the policy mentioned by our Honorable President, our Finance Minister, Tirumati Nirmala Sitharaman, has announced Godavari Krishna Pennar and Pennar Kaveri river linking has been finalized. Sir, this proposal of interlinking of rivers to transfer surplus waters from Godavari Krishna Kaveri is a right decision. Our ADM government has worked hard for it. I thank the central government for accepting our proposal, and I hope the project will be successfully completed in the next few years. Sir, at this juncture, I draw the attention of the government of India, the plight of the Indian fishermen from Tamil Nadu, from my state, who are continuously harassed, attacked, looted, and brutalized by the Sri Lankan Navy in the Bay of Bengal and the Gulf of Mannar. I plead that our government take a firm policy decision to safeguard the interest of our fishermen and protect the livelihood of lakhs of poor fishermen folks. Sir, you know very well, recently the Sri Lanka government seized the boats of the Tamil Nadu fishermen. They are going to announce they are going to auction it. This is an unfair thing, sir, because our poor fishermen, they have gone, and without such knowledge, something would have happened. But I request the central government to take necessary steps to get back the fishing boats of Tamil fishermen. Sir, and also, sir, this is the only way to settle this issue, you know very well. And the way of stopping the menace could be retrieving the Kachetivu. This is the very thing, sir. You know very well in West Bengal also, when a certain island is given to Bangladesh, at that time it is possible by the parliament. But Kachetivu is not done like that.
is arbitrarily given at that time when Madam Indira Gandhi was the Prime Minister to the Sri Lanka, but not ratified by the Parliament. Therefore, still Kachati is the part of Indian territory. Therefore, it is high time to see that we have to fight and get this Kachati to solve the fisherman issue. Otherwise, Sri Lanka is now, they are moving towards China. That is the relations going on. It is a threatening for to our Indian security. Therefore, whatever the Chinese government is doing, not only in Arunachal, other places, even Sri Lanka also, they are trying to enter to give threat to our Indian thing. Therefore, it is high time to see that we have to take that action also, sir. Sir, and also, regarding the mentioned governance thing, sir, President address, this is the 150th birth anniversary of Vavu Chidambaram Pillai is going to, and also 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Gopi they are going to celebrate it properly. I am very thankful for the central government to come forward to the freedom fighter who navigated the ships for a British period. You lost all the life and wealth of Chidambaram Pillai. To honor that, the government has come forward. Appreciate for that, sir. Regarding the NEET examination, sir, this is known very well. We are all raising, especially Tamil Nadu, all the parties, to get the exemption to the NEET examination, because the NEET examination affects our medical students, aspiring medical students, rural people, especially rural students, that are studying there. Sir, as long as education is there in concurrent list, this problem will occur. When it has come, you know very well, 1975, 70, 76, 77 period, emergency period, at that time, former Prime Minister Indira Gandhi brought this education from state subject to central concurrent list, brought that at that time. After the government, Morarji government came, Morarji government changed many things, withdrawn the many bills, but the education, that government also allowed to continue concurrent list. Because of that subject is concurrent list, we are tight, central government taking many laws. At the same time, state governments are going down. Therefore, it is high time, I request the government to rethink it, because they announced in the President address, they are going to start nearly 200 channels of giving education for the people, and also they are going to conduct programs like professional courses, like engineering courses in regional languages. When that is the case, when we are going to promote our other languages, which is in the 8th schedule, most of the languages of that 8th schedule, including Tamil, your Bengal, all must be made, Bengal language, all must be made as a national language and an official language of this country. That is our demand. We are going raising that. That has to be done. Then only we get the equal opportunity. And also when we are conducting the all India examination, when you are writing, the state must give them the more power to see that professional admissions, courses admission, such as medical courses, is given more to the state government. That is why our party, ADMK party, go on requesting many times, meeting the central minister, Honorable Prime Minister, and asking that to help the rural people, especially students. It has to be, otherwise, what is going to happen now? There are more coaching classes started, professional course started. Lakhs of money that people are paying and to get that kind of education to enter the NEET examination. But poor people cannot do that. That is why we are asking the exemption for that. Therefore, I think the central government consider all these things, sir. And also, our Honorable Prime Minister has mentioned, as in the President address, mentioned Honorable Prime Minister's vision for that the government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, और Sabka Prayas. Sir, creating India which includes all benefits, all which has to be self-sufficient, sir. These are, I am very happy to note that this, our Prime Minister, Narendra Modi ji, has come forward this kind of vision
which is going to help our country. Therefore, I am very thankful for giving the opportunity. And also, once again, I thank the Modi ji government and Modi ji and others, and who have taken long kind of steps to see that India is going to develop for that. I thank once again for the President's address there. Thank you. Thank you. Shri A.D. Singh ji. Thank you very much, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak. I rise to thank the respected Rashtrapati ji for his very comprehensive listing of the achievements of the present government and the way forward. Indeed, the catalogue and success and achievement are impressive, and I congratulate the Prime Minister and his team for these successes and also the work in progress. This success will be even better if it was accompanied by social cohesion and unity. Unfortunately, the nation's progress is slowed down by divisions that we see emerging in society. This needs immediate course correction. This reminds me of an anecdote from Gandhiji's visit to St. Stephen's College, as reported in the College magazine of 1915. According to this story, a sadhu came to another iconic leader of our freedom struggle, Sri Gopal Krishna Gokhale, to make suggestions that would suppress a minority community. Gokhale rejected this specious religious reasoning by saying that if to be a Hindu he has to do what has been suggested, then he be better known as a non-Hindu. Rashtrapati ji said that the government is committed to counter the forces challenging the sovereignty and unity of the country at every level, and strict action will be taken against the forces inciting violence. I urge the government to inform the House actions that has been taken so far against those who publicly called for genocide and targeting specific communities. The House will support strictest of action against all such individuals, irrespective of their political affiliations. A strong government cannot be seen as cowing down to a handful of fringe elements who are sowing discord in our society on a daily basis. We pay tribute to the 20 brave hearts who made the ultimate sacrifice to defend every inch of our land in June 2020. But the threats have not diminished. More conflicts have arisen, and despite regular talks, there are no signs of illegal occupation of our land ending anytime soon. The famous salami slicing policy is in action, and our response has been muted. I need not remind the government that such silence only encourages the aggressor, who sees this as a sign of weakness. In addition, our half-hearted economic countermeasures have been ineffective. Our trade deficit with our main challenger has reached a very new high last year. Protection and unity and sovereignty of the nation is not the work of one individual. It is also not about seeking personal glory. It is national unity. I would like to pay tribute to late General Rawat, our first CDS, but I am disappointed that such a sensitive post has been lying vacant since the tragic accident. I would urge the government to find his successor quickly. It appears that the government has no succession plan or proper personal planning if one sees the number of high-level posts lying vacant in the executive and the judiciary. In the speech dealing with foreign policy, I noticed a significant omission. Momentous changes have taken place in our neighborhood when a government in Afghanistan was toppled and its friendly people have been brought under an extremist regime that denies all human and basic rights, has dragged the country into unprecedented humanitarian crisis. Historically, and including under this government, India has always stood with the people of Afghanistan and helping them in all possible manner rather generously. Our humanitarian assistance is still reaching Kabul. Given our traditionally close relations and brotherhood that Afghans feel for India, we would urge the government of India to stand firmly with the people of Afghanistan and facilitate travel and trade and continuing education of Afghans in India. The policy so far has so far been left much to be desired. In fact, even today, scores of Afghan students are stranded in Kabul without a visa, denying them the possibility of coming back to the colleges. Their future is being put on hold. Our policy will need to focus on the people, and we should be using our influence to ensure the regime in Kabul works towards forming an inclusive national government. Otherwise, it is feared that Afghanistan will become a playground for radical and anti-India groups. Please conclude. India will have to learn to stand with its friends.
If not, we will be repeating the historical mistake of once letting down our friendly people of Tibet. It is well documented that the Tibetans never accepted the sovereignty and suzerainty of the Chinese. Even Nehru, who is much loved by the current government, advised them to approach the UN and sent a young military officer, Zorawar Bakshi, to undertake strategic military reconnaissance in Tibet in 1949. Things did not turn out as planned, and rest is history. Please conclude. However, the nation faces long-term consequences, both action and inaction, in this increasingly multipolar world. India will have to align itself with its own national interests in its own neighborhood and beyond. Thank you very much. Thank you. Shri Birendra Prasad Vaishya ji. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to discuss on the subject. I raise here to thank His Excellency, President of India, for his presidential address. Sir, in his presentation, President very rightly mentioned during this period our development in the health sector, our development in the infrastructure, agriculture sector, sports arena, everything Honorable President is described in his address. Sir, I must compliment Prime Minister Narendra Modi ji and his government, because within a year our government successfully given 70% adult population of the fully vaccinated. Sir, India is a big country, and within this short span of time, sir, 150 crore Indian citizens is vaccinated, sir. When vaccination started, sir, every part of the world, they have discussed how it possible India to implement this project, because India have a huge population. But this government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it is clearly justified that India is doing everything, India can do anything, and it is a great success for Indian government. More than 70 senior citizens of the country, adult citizens of Kati, is vaccinated. Sir, in health sector, sir, within this year, our country has developed in marvelously well, sir. Sir, we remember in the first wave of COVID, sir, India is crying for sanitizer. There's shortage of masks, there's shortage of medicine. But, sir, within this year, India developed anything. We produce sufficient masks, sir. Now we can export. We have produced our vaccine, and now we can export, and we produce the medicine also. This is the successful of this government. I must compliment health sector. I must salute all the health workers for their great successful, sir. Sir, another great achievement of this government is, sir, agriculture sector, sir. Government has given almost priority in the agriculture sector, sir. And during this year, COVID period, what a worst condition faced by our people, urban area, rural area, farmers, everybody faced the problem. Although there is a COVID, sir, 30% agriculture produce has increased during that period, sir. Sir, not only that, sir, 33%, sir, horticulture production also increased, sir. But I must compliment this government, sir. The government procured more than 430 lakhs metric tons of the wheat during the Rabi season, benefit about the 50 lakhs farmers, sir. And record quantity of about 90 lakhs metric tons of paddy was procured during Kharif season, sir, benefited 1 crore 30 lakhs people.
This is the achievement. This is the achievement of the government. Not only increase the production, farmers are get benefit, farmers are get their price. Instead of going other place, government has given enough money and government procured this product. I must compliment Narendra Modi ji for this successful India. Sir, not only that, sir. Not only that, sir. Country should remember one thing. During the COVID period, Indian agriculture products is increased like anything else. This is one of the greatest achievements, sir. Secondly, sir, one more thing, sir. I am coming from the Assam, sir. During this period, Assam also export agriculture product to the neighboring foreign countries, sir. This is the achievement of our government, sir. Sir, one more thing. I like to infrastructure development. We always speaking of the infrastructure. Through the Bharat Mara Parijojana, sir, infrastructure development is achieved in every part of the country, sir. Sir, if I'm not speaking about the Tokyo Olympic, it will be incomplete, sir. I'm happy to say that, sir, I lead the Indian contingent Tokyo Olympic Games. I was the chief of mission for Indian contingent, sir. And India, for the first time, India's making history, India getting all type record medals in Tokyo Olympic Games, sir. Sir, in the athletics, earlier our Bindra got the medal in the shooting. In athletics, for the first time, Indian athletes got the gold medal, sir, in the athletics. I must congratulate him, sir. Sir, northeastern region is the very intricate part of our country, sir. Sir, it is long way from Delhi, sir. From Delhi to Guwahati, it is more than 2,000 kilometers, sir. Other northern, it is more than 2,700 kilometers, sir. But, sir, this Narendra Modi government has given well transportation system, well railway system to the northeastern region, sir. And today, I am proudly said, sir, proudly say, all the capital of northeastern region today, railway connectivity is there. Every part of the northeastern region have a railway to there. There is a better air connectivity is there, and recently the shipping minister has announced there will be water route connectivity will be started very soon, sir. Sir, Assam is famous for tea production, sir. India is getting huge currency, foreign currency from the tea, sir. And small tea grower of Assam played very important role for the tea production of Assam, sir. So small tree growers, they are not only produce the tea, sir. They are successfully resolve certain extent of unemployment problem in Assam, sir. So to encourage tea industry, to encourage small tree grower is the call of our. Although government has took some initiative to develop the tea industry of Assam, I specially request through this presidential address, through you, sir, I request Honorable Minister to government, sir, look after this issue and they should give a priority, topmost priority to the small tree growers is our country in the interest of the Indian economy, in the interest of the northeastern region's economy, in the interest of the Assam economy, and especially in the interest of the curb the unemployment in our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. Assam is a oil producing state, sir. Assam have a huge quantity of oil and natural gas, sir. And I like to request government, through you, sir, please establish some better there is a lot, this government has taken lots of initiative. This government has given more than 3,000 crore rupees for the expansion of the Numaligarh refinery. This government is taking initiative to biofuel gas production Numaligarh refinery, to export oil products from Numaligarh refinery to the other parts of the world, sir. But I like to request you, sir, some more social activity for the petroleum ministry should be started in Assam, sir, because we are an oil producing sector, and this oil sector have a huge amount of money, and they have a special responsibility,
special community responsibility fund is there, sir. I like to request through you, sir, I like to request government to take some initiative, given some more money in the social responsibility scheme to the northeastern region to build some more hospital, infrastructure project, etc. Especially, sir, according to report of the World Health Organization, maximum number of cancer patients of our country is from the Assam and northeastern region, sir. I like to request you to you, government, to the ministry, please establish some special modern super specialty hospital, especially in Upper Assam, from the oil responsibility fund. I think if this will be done, definitely it will not only benefit from Assam, it will benefit Assam and northeastern region. With this word, sir, I totally support the motion moved by the Honorable Minister to thank the President. I totally support the motion. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफ़र में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से
8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ इस देश में, कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे, इस हाउस में हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, डिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है सर। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है, और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ 5वां परिवर्तन। सर, ये 6ठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल हाई लाइसेंसिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है, जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर, जो 7वां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। यह फर्क आया है, 9वां फर्क। सर, 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रौब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती टी टी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रौब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रौब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था, उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक
देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर। एक और परिवर्तन है जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो या समाज के किसी भी वर्ग को। ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था उसमें रोक लगी है। सर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में 12वां मैं बता रहा हूं कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए। और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल जो बिल की प्रभावी नहीं थे, लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर, एक और बदलाव जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप वाराणसी चले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था, और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें ना करते हों। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने
घुस घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहाँ के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे, उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने। हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया। देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है उस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है, इस पर कानून बनना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। उस वक्त जो है वो कुछ लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी पार्लियामेंट में उस समय की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, जो कि संविधान में समानता के अवसर देने वाली बात थी, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई बात थी, नहीं माना। मोदी जी ने क्या किया, जो परिवर्तन आया सर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कानूनी तौर से क्राइम माना, कुरीति माना, कुप्रथा माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम इस पार्लियामेंट में कानून लाए। पार्लियामेंट का सम्मान कौन करता है? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस समय के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ था किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 312 ऐसे
312 ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हुए जिसको कि निष्प्रभावी बनाने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल हुआ। हम तो प्रभावी बनाने के लिए सर करते रहे। सर इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव देश ने देखा सर, वो बदलाव कश्मीर जो हमारे देश का ताज है, जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग सोचते थे कभी मतलब सोचते भी बात भी करते थे यार 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता। जितनी भी सेंटर के आप बिल हम पास करते थे, कानून बनाते थे, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून जो है बिजली जाएगी देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी अगर पार्लियामेंट बनाएगा। पानी के लिए जो कानून बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगा। रोजगार के लिए जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। जो पिछड़े हैं, कमजोर तबके हैं, उनके रिजर्वेशन का कोई फैसला पार्लियामेंट करेगी वो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुआ कोई फैसला होगा उस पर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। जम्मू कश्मीर को देश की प्रगति की धारा से काटने वाले 370 को खत्म किया। ये परिवर्तन आया मोदी जी के साथ शासनकाल में। और आज पार्लियामेंट को यह लिखने की जरूरत किसी बिल पर या किसी कानून पर नहीं पड़ती कि ये जो शिक्षा का कानून है, ये जो रोजगार का कानून है, ये जो बिजली पानी सड़क का कानून है, ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये परिवर्तन सर बहुत बड़ा आया है। उसके अलावा आपने सीए का देखा होगा। सीए पर लेकर के काफी भ्रम भय का माहौल पैदा किया गया, जबकि यह हिंदुस्तान का उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में और भुट्टो साहब के समय में एक फैसला हुआ कि जो उस देश के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान उनकी सुरक्षा करेगा, उनके सम्मान की, उनके संस्कृति की, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की। ये पंत मिर्जा एग्रीमेंट के तौर से जाना जाता है। वो एक संकट का समय है जब तालिबानी मानसिकता ने जो है वो इन देशों को अपने चपेट में ले लिया। वहां के जो अल्पसंख्यक की बात मैं कह रहा हूं तो वहां हिंदू, वहां पर जो है सिख भाई बहन, वहां पर क्रिश्चियन और भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन हैं बहुत से और सभी लोग रहते हैं, उनका सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक अधिकार पूरी तरह से खतरे में आ गए। ये देश की जरूरत थी, ये पार्लियामेंट की जरूरत थी। जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था उस फैसले को प्रभावी कराने की जरूरत थी। और सीए में अमेंडमेंट आया, आप सबने पास किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। और जिस वक्त अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का जुर्म चल रहा था, उस वक्त वहां से इसी सीए की वजह से, सीए के जो संशोधन किया गया, इसी वजह से वहां के तमाम हिंदू भाई, वहां के तमाम सिख भाई, तमाम यहां तक कि जो मुस्लिम भाई बहनें थीं, उनको भी हिंदुस्तान सुरक्षित लाने और उनकी सुरक्षा करने का काम हुआ है। यह परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद और उससे पहले जो 10 साल था उसमें। सर एक परिवर्तन और आज देश एक बहुत संकट और कंटक के काल में गुजर रहा है। अभी भी कोरोना का संकट आया, किसी भविष्यवक्ता ने यह नहीं कहा था कि कोरोना कब आएगा और कैसे आएगा और कौन कितनों को मारेगा, कितनों को नहीं मारेगा। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता था। एक ये बहुत बड़ी आपदा आई और 100 साल पहले जब ये आपदा आई थी, उपसभापति महोदय, जिसे कि स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था, उस वक्त हमारे देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस 30 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान सब मिला के मैं कह रहा हूं 30 करोड़। उस 100 साल पहले उस स्पेनिश फ्लू में कितने लोगों की मौत हुई थी? 2 करोड़ से ज्यादा मौत, ये डॉक्यूमेंट है। आज हमारी आबादी 140-50 करोड़ की